Hello, welcome back, dear children, to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I'm Vanna, and we are doing Book 7. Here, this is your English Grammar book, and the name of your book is English Grammar Plus Skills Unleashed Workbook. So, children, today we are going to start a new chapter, and it is chapter number 10 of your book, and the name of the chapter is Preposition. So, let's start with the chapter. So, a preposition is a word typically placed before a noun or a pronoun. So, preposition क्या होता है? एक ऐसा word होता है जिसे हम noun या फिर pronoun से पहले लिखते हैं. It helps to show how the person or thing denoted by the noun is related to something else in the sentence. So, ये क्या करते हैं? बताते हैं कि जो भी person या thing है वो किसी और चीज से कैसे relate कर रही है sentence में. So here the first preposition comes. पहला preposition है वो है at. So at को हमने देखा होगा बहुत जगहों पे हमने यूज किया अपने सेंटेंस में. So at is used for a point of time. So किसी point of time में हम at को यूज करते हैं, टाइम बताने के लिए यूज करते हैं. The point of time is usually expressed in hours and minutes. So hours और minutes में ये टाइम बताया जाता है. Other expressions of the point of time include afternoon, at midnight, at sunrise, at sunset, at dawn, at dusk, at the beginning of the lecture, at the end of the lesson, etc. So आपने इतने सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स देखे, सब में आपने देखा कि ना तो ये सिर्फ आवर्स और मिनट्स के लिए यूज होता है, इसके अलावा इन सब चीजों के लिए यूज होता है. जब भी हम टाइम की बात करते हैं उस चीज के लिए हम at को यूज करते हैं. Now here the examples are given. My class begins at 10 a.m. So अब यहाँ पे particular time है इसलिए at लिखा है. The office closes at 6 p.m. There is no transaction at noon and the air is cool at dawn. So आप देख सकते हो हर जगह पे एक particular time की बात हो रही है. कहीं पे proper clock वाले time की बात हो रही है, कभी जो है कहीं पे दिन के किसी time की बात हो रही है कि noon है या फिर dawn है. So इनकी बात हो रही है. So we have to, whenever we are writing at, we have to be careful while doing this. At is also used for festivals which occur once a year. So at हम festivals के लिए भी use करते हैं जो साल में एक बार आती हैं. It also includes the time around the festival, not just that particular day. So festival के आसपास के time के लिए भी हम at को use करते हैं, ना ही उस particular दिन के लिए use करते हैं. For example, Arun comes home at Diwali. We have leaves at Christmas and at Eid. So Christmas और Eid में हमारी छुट्टी होती है. So यहाँ पे leaves का मतलब छुट्टी है. Similarly, we say at New Year, at Holi, at Easter, at Onam, etc. We also say at lunchtime, at bedtime, at weekend, etc. So ये सब जो particular जगह दी गई हैं, टाइम के बारे में बताया गया है. वी हैव टू रिमेम्बर दिस कि at हमें कब कब यूज करना है. नेक्स्ट इज ऑन. ऑन कब यूज करना है? ऑन इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर डे और टाइम. सो किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए या फिर डेट के लिए ये यूज किया जाता है ऑन. द डे मे बी एनी स्पेशल डे लाइक आवर बर्थडे और एन एनिवर्सरी एक्सेट्रा. सो कोई भी दिन हो सकता है वो, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं. For example, the school will reopen on 5 July. School जो है 5 जुलाई को reopen होगा. We go to temple on Sundays. So हम temple जाते हैं Sunday. India got independence on 15th August 1947. So आप देख सकते हो यहाँ पे date की बात है तो on लिखा गया है, day की बात है तो on लिखा गया है, again ये date है तो on लिखा गया है. So कोई भी डेट या फिर डे हो तो हम ऑन को यूज करते हैं. ऑन इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे. सो किसी भी एक पर्टिकुलर डे का एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज वेडिंग डे ही वोक अप वेरी लेट. सो अब यहाँ पे क्या है? ऑन द मॉर्निंग. मॉर्निंग से पहले हमने ऑन लगाया है कि अपने वेडिंग डे में भी वो देर से उठा. We visited them on the afternoon. So अब आप देखोगे यहाँ पे
यहाँ पे द मॉर्निंग से पहले हमने ऑन लगाया है, यहाँ पे द आफ्टरनून से पहले यहाँ पे ऑन लगाया है. Now read the following passages and encircle the preposition. Here children, correct the spelling of preposition pre. You have to write here e. One has been done for you. So on the bank of river Yamuna was the palace of King Shoradev. Manohar was one of the servants in the palace. Early one morning, Manohar accompanied Princess Rukmini gathering for flowers. Rukmini carried a silver basket in which she put many kinds of flowers that she took. When it was full, she turned to go home. So children, आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें preposition को सर्कल करना है. तो अभी तो हमने 2 ही preposition पढ़े हैं. जब हम आगे और पढ़ेंगे तो आप क्या करना, वो सारे आपको इसमें सर्कल करने हैं. Now the third preposition that we are going to do is in. In is used for period of time. एक period के बारे में बताते हैं, time के एक duration के बारे में बताता है. We say in an hour, in a day, in a month, in a year, in summer, in the 21st century, in the dinner hour, in the daytime, in the grammar class, etc. So आप देख सकते हो कि in हमने किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में जब बात करते हैं तब हमने यहाँ पे यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल इन जून इट इज वेरी हॉट. सो यहाँ पे जून के एक महीने की बात हो रही है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है. वी विल रिटर्न इन एन आवर. सो उस 1 घंटे की बात हो रही है कि उस घंटे के अंदर अंदर वो कभी भी आ सकते हैं. टॉम स्लीप्स इन द डे टाइम. अब यहाँ पूरे दिन की बात हो रही है कि जो दिन में जो टाइम होता है सोने का, उस टाइम पे टॉम सोता है. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. सो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में. नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग. नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो है ड्यूरिंग. सो ड्यूरिंग इज यूज्ड टू मीन दैट समथिंग गोज ऑन थ्रू अ पीरियड. सो किसी एक पीरियड की बात होती है यहाँ पे. जब ड्यूरिंग की बात हम कर रहे हैं तो मतलब किसी एक टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल यूजुअली फूड इज राशन ड्यूरिंग वॉर. सो फूड को क्या करा जाता है, राशन के रूप में बांटा जाता है वॉर की सिचुएशन. सो यहाँ पे ड्यूरिंग लगाया गया है. देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर. जब गर्मियों का मौसम आता है तो पानी की कमी हो जाती है. तो यहाँ पे ड्यूरिंग लगाया गया, बिफोर वॉर एंड समर. ड्यूरिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन दैट समथिंग हैपेंड इन द कोर्स ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ड्यूरिंग इसलिए भी यूज किया जाता है जो बताता है एक पीरियड में या एक उस टाइम में क्या क्या हुआ था. फॉर एग्जाम्पल द मोबाइल वॉज स्टोलन ड्यूरिंग माई एब्सेंस. मेरे एब्सेंस में जब मैं नहीं था तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया. द हाउस वॉज बर्गल्ड ड्यूरिंग संडे नाइट. सो हाउस जो है हाउस में जो है बर्गल्ड मीन्स बर्गर्स वो आ गए थे. हमारे जो चोर हैं वो रात में आए और उन्होंने संडे रात को सारी चोरी कर डाली. सो ड्यूरिंग संडे नाइट मतलब यहाँ पे संडे नाइट को डिस्क्राइब किया जा रहा है. नेक्स्ट इज बाय. By is used to mean the latest time of the completion of something. So by कब यूज किया था, जब हम किसी भी काम के completion में मतलब उस काम को complete करने वाले तब हम by का यूज करते हैं. For example, the application should be submitted by next Monday. So अब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर उस टाइम की बात कर रहे हो कि अब ये टाइम आने वाला है तो यहाँ तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए. You should return by 6 p.m. He had finished the work by 3 p.m. So तुम्हें जो 6 बजे तक आ जाना. तो एक वो टाइम आने वाला है उसके बारे में बात करें. Now he had finished the work by 3 p.m. उसने काम 3 बजे तक खत्म कर लिया था. मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है यहाँ पे. Next is for. For is used to show the period of time of an action or a situation. So for यूज किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिर एक्शन के लिए किसी भी सिचुएशन में. फॉर एग्जाम्पल आई हैव वेटेड हियर फॉर 2 hours. सो क्या बता रहा है, टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है. इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर नाउ. अगेन हियर टाइम इज डिस्क्राइब. नेक्स्ट द preposition that we are going to learn is since. Since is used to indicate the point of time from which
an action or situation continued or has continued and continues. So since क्या बताता है, किसी ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताता है कि काम तब शुरू हुआ था और तब से अभी तक वो काम चल रहा है या चल चुका है या होने वाला है. सो ये सिंस हम इस कंडीशन में यूज करते हैं. सो वी हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM. हम सुबह 9 बजे से वर्क कर रहे हैं. सो ये उस पर्टिकुलर टाइम को बताया कि उस टाइम से वर्क शुरू होता है और अभी तक चल रहा है. He has been living here since 2005. So 2005 से शुरू किया था और अभी तक यहीं पे रह रहा है. I've been waited here since you left. So जब से तुम गए थे तब से मैं यहीं पे हूँ. And she has lived here since 2010. So वो 2010 से यहाँ पे अभी तक रह रही है. Now fill in the blanks. Choosing suitable preposition from the box. A preposition may be used more than once. So यहाँ पे कुछ preposition दिए गए हैं, इन्हें हमें fill करना है और एक preposition एक से ज्यादा बार भी use किया जा सकता है. So the children here, the first one is he was born dash 15 June. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक particular time की बात हो रहा है. He was born on 15th June 1986. Dash is the beginning of the lesson. There are many examples. So here we have to search from here and then we have to complete the exercises given in your book. So this is your homework, children. Now next comes preposition in the expression of place. So वो preposition जो place को express करते हैं. So here the first one is in. In is used for province or countries. किसी province के लिए या फिर किसी country के लिए use किया जाता है. For example, he lives in Delhi. In Africa, the people are mainly blacks. In India, there are many religions, and in Goa, there are many beaches. तो आप देख सकते हो कि किसी particular country के लिए ये word in यहाँ पे use हुआ है. In is used for a general kind of residence. So in को हम किसी एक particular general kind के residence के लिए भी use करते हैं. For example, he lives in a bungalow. So bungalow के लिए हमने use किया. In villages, many people live in huts. So यहाँ पे village के लिए भी in use हुआ है and huts के लिए भी हमने यहाँ पे in use किया है. In is used for a general kind of place of work. So in use करते हैं किसी general place of work के लिए. She works in a school and my uncle works in a bank. So यहाँ पे हमने दोनों जगहों पे in का use किया है. Next is at. At is used for a particular place or work of residence. So at को हम किसी particular place या फिर residence के लिए use करते हैं. For example, he works at Sherwood College, Shimla. वो शेरवुड कॉलेज शिमला में रहता है. एंड टोनी लिव्स एट 82 पार्क एवेन्यू एंड जेनिफर लिव्स एट 14 स्क्वायर रोड बांद्रा. ही वर्क्स एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरठ. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस की जहाँ पे बात की गई वहां पे हमने एट लिखा गया. सो अभी हमने पढ़ा है preposition of place. Next, here children you have to encircle the correct preposition in the following sentence. So आपको सेंटेंस को पढ़ना है और ये जो दो preposition दिए गए हैं with और in दोनों में से चूज करना है which one is correct and उसको ही हमें सर्कल करना है. The other day he dealt dash us kindly. In us kindly or with us kindly. So here with will come. The policeman beat the thief by a cane with a cane. So here by will come. So policeman ने thief को मारा था किस चीज से? cane से. So children, we have done the two of the questions here. Rest questions are your homework. So all these you have to do on your own. Now the next preposition that we are going to learn is preposition attached to words. So कुछ ऐसे preposition है जो words के साथ attach किए जाते हैं. So particular prepositions are used for certain verbs. So ये जो particular preposition है ये कुछ verbs के लिए use किए जाते हैं. Only through careful study and practice can sure such preposition can be used correctly. So आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेशली आपके लिए लिखा गया है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसे इजीली नहीं लर्न कर पाएंगे. सो ओनली थ्रू केयरफुल स्टडी, आपको इसको केयरफुली स्टडी करना है एंड प्रैक्टिस करना है, जिसके बाद आप इन्हें इजीली
and correctly use कर सकते हैं. A list of such verbs and prepositions are given below. So यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट भी दी गई है. Carefully study and try to memorize the words with their respective preposition and use them in your speech and writing. So इन्हें जो हमें अच्छे से पढ़ना है और फिर इन्हें हमें यूज करना है जब भी हम कुछ भी लिखते हैं. फर्स्ट इज एबिलिटी फॉर. अब जो डार्क कलर से लिखा गया है वो हमारे preposition को अटैच किया गया है एक वर्ड के साथ, और वो वर्ड क्या है? एक वर्ब. सो वर्ब के साथ हमने preposition को अटैच कर रखा है. एबिलिटी क्या है? एक वर्ब, एक काम है, और उसके साथ हमने फॉर को अटैच किया है. इसका मतलब है और इन सम वर्ड, किसी वर्ब में. अबंडेंस ऑफ food. Accedate to a request, acquaintance with a person, affection for a person, admission to a college, agree with a person, application to a person, attention to study, aversion, aversion of something, battle with someone, absistence from wine, access to a person or a place, accessions to the throne, accuse of murder, admission to a plan or a society, advance in learning, agree to a proposal, attachment to a person, apologize to a person, attraction to or towards a thing, and bias towards a thing. So these are some of the prepositions, और उनके साथ थोड़े बहुत sentences भी लिखे गए हैं कि किस लिए ये यूज किए जाते हैं. Next is blind to one's own fault, capacities for mathematics, cause of trouble, charge of murder, consult with a person, contact with somebody, converse with a person, cure a man of a disease, cut a thing into pieces, control over a person, candidate for election, cause for anxiety, and care for safety, complaint against a person, contempt for a person, compensation for loss, crave for something, contribution to a fund, cling to a thing, controversy on a subject. So like that, all these prepositions are given here, children. There are many pages. आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है, इन्हें समझना है, and then we have to use all these prepositions. So these are some more prepositions given in your book, and it's up to Z. It started from A and it's up to Z. Now make the following readable story by filling in the blanks with the appropriate preposition. So यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, हमें उसे अच्छे से पढ़ना है और फिर हमें उसमें preposition को fill करना है. One has been done for you. एक दिया गया है आपको, एक करा हुआ है. Once there lived a rich merchant. He dealt dash silk. He dealt with silk. आप यहाँ पर with लिख सकते हैं. One day a large bale of silk was stolen. अब यहाँ पे of आएगा. So children, like this, you have to read it carefully. अच्छे से पढ़ो. Preposition जो भी हमने पढ़े उन्हें यहाँ पे हमें fill करके देखो कि which suits better. Next is choose the correct preposition and fill in the blanks. Preposition यहाँ पे दिए गए हैं, अब उन्हें हमें fill करना है. यहाँ पे I think कुछ न्यूज रिपोर्ट दी गई है. रेल ट्रैफिक वॉज डिस्टर्प्टेड dash the Allahabad Jhansi section. So on the Allahabad Jhansi section or in the Allahabad Jhansi section. So it's your homework. You have to decide which preposition you have to fill here. So this you have to do on your own. Now next is F exercise. The following is a telephonic conversation. Fill in the blanks with the suitable prepositions. यहाँ पे कुछ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दी गई है. अब ये आपको जैसे ध्यान से देखना है और यू हैव टू फिल इन द preposition. इसमें फिर preposition फिल करना है. सो फर्स्ट देखिए, आप देख सकते हो कि नितिन एंड डॉक्टर राम के बीच में बात हो रही है. सो नितिन सेज हेलो मे आई स्पीक टू डॉक्टर राम. तो टू आएगा फर्स्ट में. ऑफ कोर्स राम इज ऑन द लाइन. So Ram on the line. So यहाँ पे क्या आएगा? On. May I know who is calling? So children, like this, you have to read it carefully and then complete the prepositions here. Now the next exercise, let us do more. The given passage has some prepositional mistakes. So passage दिया गया है, इसमें कुछ preposition
जो दिए गए हैं वो गलत लिखे हुए हैं. Find out the mistake and underline them. Also write the correct preposition in the space given alongside. So वहाँ पे हमें preposition को ढूंढना है जो गलत है और correct one को हमें यहाँ पे लिखना है. So first one is done like this. You have to do the rest. Dinosaurs were one of the several kinds. So यहाँ पे from नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा of. So like this, children, you have to complete the rest of the exercise. Next is fill in the blanks, choosing suitable preposition from the box. A preposition may be used more than once, and one has been done for you. Have you recovered from your illness? My mother always bathes with cold water. So children, we have done 2 rest questions. Are your homework you have to do on your own. Now come to I exercise. Now complete these passages choosing appropriate preposition from the ones given in the bracket. So bracket में कुछ preposition दिए गए, उसमें से choose करना है कौन सा वाला preposition आएगा कौन सी जगह. So children, this is also your homework. You have to do on your own. अब इन दोनों में से एक यहाँ आएगा और जो दूसरा वाला है वो दूसरे blank में आएगा. So do it yourself. And with this, we have completed this chapter also. And I hope that you have understood prepositions, and if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay with me.